Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to Farmer Minds channel. So today we are going to discuss about a very interesting branch which is biotechnology and I'm really thankful to Anurag जो हमें बताने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नाइपर मोहाली में। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या स्कोप है, क्या फ़ायदे हैं, क्या उनको लेना चाहिए और आगे क्या कर सकते हैं। तो दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो होल ताकि आपको सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अराउंड समझ आ सकें क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्रांच है और मतलब जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में सब बोलते हैं नई ब्रांच है लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है मतलब बहुत पहले से इनफैक्ट इमेमोरियल टाइम्स। तो और अभी ये काफ़ी ज़्यादा इसको हाइप मिल रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इससे बन रही हैं, वैक्सीन्स वगैरह भी आ रही हैं, है ना? तो आई थिंक इफ़ यू वांट टू बी अ पर्सन हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो ये वीडियो आपके लिए। तो थैंक यू सो मच अनुराग हमसे कनेक्ट करने के लिए एंड आई जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हम आज बहुत सारा आज सीखने वाले हैं आपसे आज। तो कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस? Yeah. So first of all, thank you, Akash, for inviting me. So let's start with the introduction. या So hello everyone. Good evening. My name is Anurag Tiwari and I'm passed out from Naipur Mohali and I have done my masters in Department of Biotechnology. So I come from Pune, Maharashtra, and I was part of this Naipur journey from 2021 to 23. ओके, दैट्स ग्रेट। थोड़ा आपके बारे में जानते हैं लाइक व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या पसंद है? Okay, so talking about my hobbies, so हम्म। sports, if I talk about sports, the cricket ओके। is always going to be first. या एंड उसके अलावा आई लाइक रीडिंग बुक्स इन माय फ्री टाइम एंड देन नई चीजें सीखना ज्यादा पसंद है मुझे. अच्छा सो अच्छा। ऑलवेज ट्राई टू गेट अपग्रेड माई सेल्फ. ओके, लाइक कैन आई आस्क यू हुज योर फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली. ओके, विराट कोहली, सेम हियर यार, सेम हियर। ओके, या. तो दैट्स ग्रेट। और बुक्स में मतलब व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू रीड? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फाइनेंस, ऐसा कुछ? ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोस्टली. अच्छा अच्छा। ओके, आई एम आल्सो इनटू लॉट ऑफ बुक्स, नाइस. atomic habits, ikigai, all those things. Okay. या वन मोर लाइक there was one book, think like a monk, so by Jay Shetty, so it's also a nice book. Yeah, I have that also. मुझे पढ़नी है अभी. I'll Yeah, read that in free time. it's a Okay. good book. Yeah, I'll read that. Okay. So coming to the topic, थोड़ा GPAT नाइपर के बारे में बताओ. How was your journey and कैसे आप नाइपर मोहाली तक पहुंचे? Yeah. हम्म। So when I talk about my GPAT journey, so I started my preparation in 2020 month of July. Okay. So in seventh semester of my B Farm, it was a pretty late हम्म। because till my third year I was not aware about these exams. So in my third year, end of my third year, I got to know about the GPAT and NIPA exam. So at that time, my thinking was like, ये तो अपने चीज नहीं है. I was a very average student at that time, and that was my mindset at that time. But again, when I started my preparation, so one of my friends suggested me this exam. So his name is Mohit Majan. So I always give him the credit because he was the start point of that journey. हम्म। So then I started preparation. Again, pandemic came. Then from July, I started my preparation those 7 months. So first thing, what I did before knowing what to study, how to हम्म। study, I first analyzed the exam. So I just took last 20 year question papers. I analyzed which are the subjects the most questions are coming. Then I segmented into major subject, minor subject, and the subject which I can avoid because the 6 months, 7 months I had the time. So अच्छा। in that time I need to work hard as well as smart. So first thing I did analyze the exam, हम्म। then what to study, and the third step was how to study. So the major subject, as we all know, the pharmacology, pharmaceutics, chemistry, then the organic chemistry, inorganic chemistry, these things. Then again, when you come to minor subjects, the industrial pharmacy, and then I think chemistry again. There was one more sub part of organic chemistry. So in such way, I jurisprudence, I segmented the subject and I decided my timeline how I'll do a step by step. So yeah, it was a nice journey. I learned a lot during that phase, which changed my mentality. So yeah, it was a nice experience. Okay. Okay. Uh, okay. So now coming to the biotechnology branch. So थोड़ा इसके बारे में बताओगे आप कि what's it's all about in Naipur Mohali?
और पहली बात तो क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम, और क्या इसका स्कोप है आगे आने वाले टाइम में, और मतलब कैसे स्टूडेंट्स जो मतलब किन टाइप के स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए अगर वो बायोटेक्नोलॉजी में आना चाह रहे हैं। Okay, so after getting my NIPA result, so my first priority was to get in NIPA Mohali, and with my rank, this branch was most suitable. And at that time, जैसे हम सबको पता है, the vaccines, the biologics, इसकी बहुत बातें हो रही थी. So let me tell you one thing: biotechnology and pharmacy, these are two. You can connect them, but these are two not similar. These are different branches. So if you talk about pharmacy, pharmaceutics or analysis, these are more related to small molecules, the drugs which we synthesize from natural sources in the laboratory. But when we talk about biotechnology, it's more about the microorganisms. So it's a complete different field. So when I came to this biotechnology, the subjects were very different, because what I can remember in a B Farm, one of the semester we have one subject biotechnology, but here the 2 years you have to spend in biotechnology. It was a very interesting as well as challenging, I'll say. There were more opportunities in biotechnology. The subject you'll get to study the recombinant DNA technology, cell biology, I'll say, then immunology, so more related to the biology part as well as the microorganisms. So it's a quite good branch in NIPA Mohali, I guess. Other than NIPA Mohali, NIPA Rai Bareli, Hajipur, Ahmedabad, and NIPA Guwahati, they offer biotechnology, and NIPA Hyderabad and I guess one more, NIPA Hyderabad and Kolkata, they offer biopharmaceuticals. So yeah, and in biotechnology, when I talk about the scope, yes, the placements are really good. If I talk about this year, 98% placement was there, and the other students who opted for PhD. So before getting into biotechnology, if you are more interested toward vaccines, these biologics, you can choose for biotechnology in Naipur Mohali. You will get enough exposure and opportunities for higher study as well as your placement. And yeah, that's it. ओके, लाइक एक क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें आती है ना, एम टेक और एम फार्म, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है अगर आप बता सकें। Okay, so MTech or MS Farm. So MTech is process more depends on, I'll say, fermentation and scale up. So for that, it is they also have the similar course like biotechnology, but they have some additional things also in their course, and which will help them for jobs also. अच्छा, Yeah, और एम एस फार्म में हम थ्योरी it's core ज्यादा, biotechnology. कोर Yeah, बायोटेक्नोलॉजी, yeah, research. okay, research part is there, and that is kind of industrial point of view, like fermentation की तरफ Yes, जाने की। industrial point of view. True. Okay, that's great. ठीक है, तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी अगर हम एक स्टूडेंट आ जाए, उसके बाद जैसे रोल्स, जॉब रोल्स क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन तो ये। और नाइपर मॉली में बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी कंपनीज इस बार मतलब आई थी, जॉब रोल्स जैसे कि एनालिस्ट, कंसल्टेंट, तो वैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो रोल्स भी हैं, एनालिस्ट हैं, कंसल्टेंट, वो रोल्स तो हमेशा रहेंगे कंसल्टेंसी वाले। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर और कोई रूल्स हैं जो बताना चाहो, एंड कंपनीज कौन कौन सी है जो आती है। Okay, so for biotechnology roles, the first thing is analytical R&D. ओके, जब अगर आप कोर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो देयर आर कंपनीज, देन QA QC फॉर बायोसिमिलर्स विच इज अ डिफरेंट फील्ड. उसके अलावा आप, yes, the companies, if I talk, Kashiv Bioscience, Biocon was there, Sanofi या for core R&D. if I talk, Serum Institute of India, so वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है because recently they have done very well. And if I talk about the Cineos was also there during the placement time, and other companies were for, as you have mentioned, the analyst and consultant roles. अच्छा, तो इसमें मेडिकल राइटिंग वगैरह का भी रोल था। Yes, ओके, yes, scientific writing का भी है. साइंटिफिक, Yes, yes. So Sanofi came for the scientific writing. ओके, दैट्स ग्रेट। Yeah. So in case of placement, Yeah, yeah. yeah. So what happened recently? So after the COVID, as you can say, the boom of biotechnology is more like now industries are more focusing on biotechnology. So the demand for these jobs are also more. So every firm want a person who have both knowledge, the core job as well as the biotechnology, who can help them. So it's a good chance opportunity. ओके, दैट्स ग्रेट यार। अच्छा, ये बताओ कि जैसे नाइपर मॉल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो
what's the most special thing that you have felt about biotechnology branch that is existing in your branch and not existing in another branches? Say biotechnology branch के अंदर है. ओके, सो जैसे कि मैंने मेंशन किया, सो बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट फोकसेस ऑन द बायोलॉजिक्स. तो यहाँ पे इफ यू सी इन लैब्स, द प्रोजेक्ट जो होते हैं, दे वर्क ऑन कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, लेशमेनियास, द बायोफार्मास्यूटिकल्स. तो ऐसी चीजों पे आपको काम करने को मिल रहा है, रिसर्च. सो व्हाट यू वर्क यू आर डूइंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस क्रॉनिक डिसीज फॉर द ट्रीटमेंट. सो ये एक अच्छी चीज है. एंड द सेकंड थिंग, द लैब एक्सपोजर, आई विल से अभी और नई नई चीजें ऐड हो रही हैं. द न्यू ब्रांच इज ऑल्सो नाउ इन नाइपो मोहाली, which is allied to biotechnology. Okay. So these things I think are more fascinating, as well as the curiosity आपके अंदर जगाती है ये चीजें when you are working on such things, the lab work. Okay. तो देख, this question is related to PhD. आपने 2 साल बायोटेक्नोलॉजी का पूरा डायनेमिक समझा है. आप 2 साल वहाँ पे थे, नाइपर वाली में बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे. तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस चीज़ पे? अगर कोई स्टूडेंट आता है, वैसे पर्सनल ओपिनियन होता है और पीएचडी करना ना करना, लेकिन अगर वो बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है तो उसको आगे पीएचडी करना चाहिए, फिर जॉब में एंटर कर जाना चाहिए? Okay, so good question. बहुत स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं half of the time. So I will suggest कि depends on your personal situation. For example, as I have mentioned कि अगर you have interest in research, and if you think that your family can support you for next more 5 years, whether in India or in abroad, you should go for. And in Naipa Mohali, I can guarantee you will get enough of good opportunities. So 3 of my batchmates from my batch only, they went to for PhD in abroad and they are doing good there. एंड अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट है, इफ यू थिंक कि आपको फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर research jobs. And after that, still you, if you think after doing job that no, still you have in you to go for higher studies, after that job also you can go, you will get more benefit because you have industrial experience as well. चलो, आपने काफ़ी अच्छे से आंसर किया इस चीज़ का, क्योंकि मतलब हम लोग बताते हैं कि पीएचडी कर लो या फिर ये कर लो. आपने ये भी बताया कि आप जॉब करने के बाद भी वापस यू कैन गो फॉर द पीएचडी पार्ट आल्सो. दैट्स ग्रेट. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी, जैसे अगर कोई स्टूडेंट जिसको मिला है अभी काउंसलिंग के दौरान या मिलने वाला है या जो आना चाह रहा है वहाँ पर, तो कोई प्री प्रिपरेशन करके आनी चाहिए या फिर जस्ट गो विद द फ्लो वहाँ पर आके? See, I will suggest if you are coming to biotechnology, so मैं आपको 2 साल की पूरी जर्नी एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो फर्स्ट सेमेस्टर 8 to 9 सब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू बी अ क्वाइट बिजी, एंड ऐसा हर डिपार्टमेंट के साथ होता है एमएस में. सो सबके लिए सेम होता है 8-9. बायोस्टैटिस्टिक्स द मोर डिफिकल्ट. या एक्चुअली सो फर्स्ट सेमेस्टर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा खुद के लिए. यू हैव टू गो विथ फ्लो. लाइक आपको अगेन एग्जाम होंगे, हर वीक एग्जाम्स होंगे, देन यू हैव टू स्टडी फॉर एकेडमिक्स, एवरीथिंग. व्हेन यू एंटर सेकंड सेमेस्टर, you will be having 5 subjects, which are major 5 subject, core 5 subject related to your degree and the lab thing. So second semester you'll get enough time for yourself for preparation of placement of PhD, because third semester से एक race start हो जाती है. The students start preparing for the placement as well as the PhD. So second semester you'll get enough time, and then third and fourth semester is lab work. आप 1 साल अपने project पे काम करोगे, and side by side you will be preparing for your future goals. And one thing is for sure, you will learn a good time management in the biotechnology department. Okay, that's great यार. ओके, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, हमने पीएचडी वाला डाउट भी क्लियर कर लिया. ठीक है, तो इन द एंड आप मुझे ये चीज़ बताइए कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर लेते हैं, करियर हमने डिस्कस कर लिया, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए? चैलेंजेस या फिर क्योंकि जैसे आई बिलोंग टू एमबीए, तो वहाँ पे चैलेंजेस थे कि अपने आप को शो अप करना था स्टेज के ऊपर, एंड वो सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ है. तो आपके लिए क्या चैलेंजेस रहे और उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है? ओके, चैलेंजेस जैसे कि मैंने मेंशन किया, द सब्जेक्ट्स जो आपको होंगे बायोटेक्नोलॉजी इस 2 साल में, वो आपके बी फार्म से अलग हैं. जो भी फार्माकोलॉजी, सोटिक्स या आपने बी फार्म की प्रिपरेशन के साथ पढ़ा है, सो यहाँ पे दे विल मोर फोकस ऑन बायोलॉजी पार्ट. सो आपको ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत नए सब्जेक्ट्स होंगे. स्टार्टिंग में आपको हो सकता है समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट वंस यू गेट टू नो, चीजें आसान हो जाती हैं.
एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई रिसर्च में बहुत जाना चाहता है देन दिस ब्रांच इज वेरी गुड। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, हाउ द थिंग्स वर्क इन इंडस्ट्री एंड ऑल। द एक्सपोजर बहुत है नाइपुर मोहाली में, स्पेशली इफ आई मेंशन। ओके ओके। आपकी पर्सनल जर्नी से रिलेटेड ये क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में है तो व्हाट्स अ फन पार्ट फॉर दैट स्टूडेंट, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड प्लेसमेंट्स एंड रिसर्च, फन पार्ट क्या रहता है? फन पार्ट एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से, जो लैब में आप एक साल स्पेंड करते हो, हाँ। that is very interesting, because till B Farm you have done labs related to pharma synthesis and pharmacognosy lab हो, ecology lab हो, but when you come to this biotechnology lab आप बहुत सारी नई चीजें सीखते हो, हम्म। and that is very interesting। जैसे चीजें आपको जब समझ आने लगती हैं, जब आप फ्लो के साथ आगे जाते हो, so वो एक साल is really a best part of the whole Naipur journey, that 1 year of lab। ओके। और कैंपस भी तो अपना बहुत मस्त है नाइपर मोहाली का। कैंपस सी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नाइपर टू एनीवन, द फर्स्ट थिंग आई से, द कैंपस लाइफ व्हिच नाइपर मोहाली प्रोवाइड्स यू इज अनमैचेबल। अनमैचेबल बिकॉज कैंपस इज सो स्पेशल। आप वहां पे जब जाते हो अपनी स्टोरी लेके, देर आर मोर 250 प्लस स्टोरीज इन दैट कैंपस, एंड यू या। गेट टू लर्न so many things from each and every individual। And one thing which is my personal opinion, that campus gives you two things which are completely opposite: the freedom and the responsibility. The way the atmosphere in that campus is really good. The stage you share with all the great minds of nation, and you got to learn many things from them. It changes your perspective towards the problems, towards your life and the goals. It's really good. So I always admire the Naipur Mohali campus life. It's unmatchable। ओके। तो ये सारी चीज अचीव करने के लिए नाइपर मोहाली तो पहुंचना पड़ेगा, है ना? अब वो वहां तक पहुंचने के लिए इन दी एंड आपको एक टिप्स देना चाहो अपनी जी पैड जर्नी जो आपने आपकी थी, तो उस दौरान आपने जो चीजें सीखी, कुछ टिप्स देना चाहो आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए कि वो नाइपर मोहाली या नाइपर पहुंच पाए। Yeah, sure. So first, I'll discuss about the exam preparation part. So कोई भी एग्जाम की जर्नी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट नो द एग्जाम एंड देन नो व्हाट टू स्टडी, एंड द थर्ड स्टेप हाउ टू स्टडी। सो पहले एग्जाम के बारे में जान लो पूरी चीजें, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट है, वेयर टू फोकस मोर, वेयर टू फोकस लेस। अगर आप थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देते हो, इट्स गुड, यू विल गेट इनफ टाइम। अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो मेरी तरह, सो यस, द थिंग इज आपके पास टाइम लिमिटेड है, सिलेबस उतना ही रहने वाला है। अगर किसी ने आपसे एक साल पहले स्टार्ट किया है एंड ही इज वर्किंग 4 hours a day, और आप अगर उससे हाफ टाइम में करना चाहते हो, यू हैव टू गिव मिनिमम 8 to 9 hours। या। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, यू हैव टू गिव। सो मेंटली यू शुड प्रिपेयर। अप्स एंड डाउन होते रहेंगे जर्नी में, विच इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। सो जब एग्जाम को समझ लेते हो, देन सेगमेंट द सब्जेक्ट, कहाँ पे मेजर फोकस करना है, कहाँ पे माइनर। कंसिस्टेंसी, आई से प्रोग्रेसिव कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। कुछ दिन होंगे यू विल फील वेरी गुड कि आज तो बहुत अच्छा पढ़ लिया। सम डेज विल बी लाइक कि कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ाई कुछ समझ नहीं रहा है, टेस्ट में स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे। इट्स ओके। द मोर यू विल फील बिफोर द एग्जाम, इट्स मोर बेटर फॉर योर एग्जाम डे। सो जितनी गलतियां कर सकते हो करो एग्जाम के पहले, so it will benefit you during the exam। And second thing, when I said the ups and down, वो चीजें होंगी, that is normal। So don't demotivate from that ups and down, always keep going। And as I always say, what is your destiny? Your dream is the journey. If you enjoying your journey, you will reach your destination for sure। burden नहीं लेना है कि करना है, you should have that goal, and if you do in discipline, you will achieve that goal for sure। ओके ओके। आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको दो चीज़ें मिली है। पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता लगा, एंड सेकेंडली अ बंच ऑफ मोटिवेशन आल्सो इन द एंड। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा, काफ़ी सारे टर्म्स भी आज डिस्कस हुए, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में भी आपको पता लगा। मेक श्योर अगर आपको कुछ नहीं पता समझ आ रहा तो जाके गूगल करना, आपको और डीप में पता लगेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में चल रही है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो और इन पे काम अच्छे से हो रहा है, क्योंकि अनुराग एक चीज़ होती है ना, जब हम बी फार्म कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल पता ही नहीं है हम, लेकिन जब नाइपर मोहाली आते हैं तो हमें छोटे छोटे टर्म्स पता लगते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग्स होती है। तो ये चीज़ है ना? तो रियली वांट टू थैंक यू अनुराग, आपने काफ़ी अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया।
आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थोड़ा अटके हुए थे इस डिसीजन पे कि लेना है कि नहीं लेना, अब वो आई थिंक कॉन्फिडेंटली परस्यू कर पाएंगे और साथ साथ समझ पाएंगे कि आगे चल के क्या फेस करने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और पूरा प्रोसेस एंजॉय करेंगे। श्योर श्योर।